Hello guys, welcome to Smartprix. Smartprix, as you guys know, is a platform where we simplify technology for everyone. We get you the latest updates, the latest news and the latest trends when it comes to technology. Also, whenever there's a new gadget in the market, we try to do an in-depth रिव्यू ऑफ दैट गैजेट. वेल गाइस, एक ऐसा ही रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं एंड रिव्यू है Realme 9 Pro Plus का. इट्स अ सीक्वल ऑफ Realme 8 Pro. वेल अगर फीचर्स की बात करें तो इट्स गॉट अ नाइस फ्लैगशिप कैमरा, इट्स गॉट अ नाइस फोटोक्रोमिक फिनिश एट द बैक, इट्स गॉट अ फ्लूइड AMOLED screen display. Well, among the many features that this phone has to offer, so mid-range segment में this phone is definitely a good offer from Realme's side. आइए चलिए बात करते हैं about this phone in detail. We will be doing a complete detailed analysis of this phone. Before we start with the video, you guys need to complete a simple step. Well, you need to like, share and subscribe our channel, guys. Alright guys, so हमारे सामने है हमारा फोन Realme 9 Pro Plus. आइए चलिए देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा. Time to do the unboxing. Talking about the packaging, well, the packaging is in yellow color. Honestly, yellow color आपका attention definitely hold करता है. इसके ऊपर लिखा हुआ है that it is the most trusted technology brand. Well, we'll just find it out in some time. आइए चलिए पहले देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा. So when you open the box, इसके अंदर आपको एक और डब्बा मिलेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है Dare to Leap. जब आप इसको खोलेंगे, so let's see आपको क्या क्या मिलेगा. You will get a smart case and a SIM ejection tool. ऑल्सो आपको मिलेगी वारंटी कार्ड एंड यूजर मैनुअल. इसमें क्विक गाइड है, सो यू गाइस कैन यूज इट एंड अपना फोन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. देन आपको दिखेगा आपका डिवाइस. वेल, हमारे पास जो डिवाइस है वो है स्टार रेल ब्लू कलर में एंड ये पैकेज्ड है बहुत ही बढ़िया तरीके से. सो यू कैन सी दैट वी हैव आवर डिवाइस इन फ्रंट ऑफ अस. इसका डिटेल रिव्यू तो हम अभी थोड़ी देर में वैसे ही करने वाले हैं. लेट्स जस्ट डिग डीपर एंड सी के और क्या क्या मिलेगा. देन आपको मिलेगा 60 वॉट्स का SuperDart चार्जर एंड अ USB केबल. सो गाइस, दिस इज व्हाट यू गेट इनसाइड द बॉक्स. एंड आइए चलिए बात करते हैं अबाउट द प्राइसिंग एंड द स्पेसिफिकेशन ऑफ Realme 9 Pro Plus. Alright guys, so let's talk about the specifications of Realme 9 Pro Plus. Talking about the body, well, the dimensions are of 160.2 into 73.3 into 8.0 mm. Well, the overall weight is of 182 grams and the glass front comes with a Gorilla Glass 5 plastic frame glass back. Talking about the display, it comes with a 6.4 Super AMOLED display with a refresh rate of 90 Hz. The chipset is of MediaTek Dimensity 925G. मेमोरी की अगर बात करें तो इसमें आते हैं तीन वेरिएंट्स. पहला वेरिएंट है 128GB 6GB रैम के साथ. दूसरा वेरिएंट है 128GB 8GB रैम के साथ. तीसरा वेरिएंट है 256GB 8GB रैम के साथ. ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें है Android 12 एंड Realme UI 3.0. रेयर कैमरास की अगर बात करें तो जो इसका वाइड मेन कैमरा है वो आता है 50 मेगापिक्सल के साथ. जो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो आता है 8 मेगापिक्सल के साथ. जो इसका मैक्रो कैमरा है वो आता है 2 मेगापिक्सल के साथ. फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये है 16 मेगापिक्सल का. Talking about the battery, well, the battery comes with a 4500 mAh, fast charging 60 watt, 100% in 44 minutes and USB power delivery 3.0. Talking about the miscellaneous thing, well, it comes with a fingerprint reader, under display optical, 3.5 mm jack. So guys, time to talk about the design of this phone. Talking about the design, well, the Realme always manages to get the best designs in the market, and with this phone, they have managed to continue the trend. If you have a thing for nice glittery glossy finishes, well, this phone will not disappoint you. It's got a nice photochromic matte finish at the back and इसके colors change होते हैं जब sunlight इसके ऊपर पड़ती है, from blue to pink to orange. Honestly, it's visually very appealing. If you have a thing for subtle designs, so आपके पास दूसरे कलर वेरिएंट्स भी आएंगे, बट जो इसका स्टार्ट रेल ब्लू कलर है ये काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है, स्पेशली जब इसके कलर्स चेंज होते हैं. सो ऑनेस्टली आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द बैक पैनल. टॉकिंग अबाउट द बैक पैनल, आपको दिखेगा ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड इसके अंदर आपको दिखेगी LED फ्लैश लाइट. टॉकिंग अबाउट द फ्रंट में भी आपको मिलेगा एक कैमरा. Talking about the display, well, it's got a 6.4 FHD AMOLED display and इसका weight भी ज्यादा नहीं है. Overall weight है 182 grams का, so ये ज्यादा भारी भी नहीं लगता पकड़ने में. Let's talk about the main features and the controls of this phone. Well, on the right hand side you have the power key button, जो कि इसका main button है. On left hand side, top left में आपको दिखेगी SIM card tray.
उसके नीचे जब आप आएंगे तो आपको दिखेंगे वॉल्यूम की कंट्रोलर्स। डाउन साउथ इन द मिडल आपको दिखेगा USB Type-C चार्जिंग पोर्ट। लेफ्ट हैंड साइड में अ वेरी गुड थिंग दे हैव पुट अ 3.5 mm जैक एंड राइट साइड पे आपको दिखेगी स्पीकर ग्रिल। स्पीकर ग्रिल भी काफी बढ़िया है, इसकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है इस फोन की। सो ओवरऑल द डिजाइन ऑफ दिस फोन इज समथिंग व्हिच इज रियली क्वर्की एंड रियली स्टाइलिश। ऑनेस्टली आई लाइक द डिजाइन, आई रियली लव द डिजाइन एंड एक तरीके से आपकी नजर जाती है इस फोन पे, स्पेशली जब ये ऐसे कोई पकड़ के रखता है। ऑनेस्टली एक और अच्छी चीज है दैट द फोन कैन होल्ड इटसेल्फ ऑन द फ्लैट सरफेस, सो ये गिरता नहीं है। As you guys can see, ये अपने आप खड़ा भी हो सकता है, so it's got a nice flat surface as well. Overall, the design is pretty good. Let's talk about the software and performance. The Realme 9 Pro Plus is among the first phones to run on Android 12 with Realme UI 3.0. The third version of Realme's launcher offers an improved and more fluid interface, even richer customization options across the entire system, enhanced privacy dashboard and privacy indications, better floating window, emojis and more. The phone supports fingerprint unlock and the under-display scanner works great. It's fast as they come. You can also set up face unlock for an even speedier unlock, though this is not as secure. The Realme 9 Pro Plus has a vapor chamber based cooling system and it's enough for the Dimensity 920 chip. The Dimensity 920 5G chipset seems like a great choice for the Realme 9 Pro Plus. It is a modern piece of hardware with more than just a capable processor and graphics. The Realme 9 Pro is barely warm after such stress tests, so you won't feel any discomfort when playing for long hours. No throttling will occur either. The cooling solution works great as well. There's only one thing that stops the Realme 9 Pro from being an excellent performer, and that's the locked 60 frames per second gaming. No game or benchmark ever goes beyond the 60 frames per second limit, and it's not because the hardware is lacking, it's because Realme is still hesitant to offer unlock refresh rate on its phones for some reason. Let's talk about the battery life. Well, the Realme 9 Pro Plus, just like the Realme 8 Pro and the Realme 7 Pro, is powered by a 4500 mAh battery. Let's talk about the camera. Well, the Realme 9 Pro Plus has a triple camera setup on the back with a 50 megapixel OIS primary, an 8 megapixel ultra wide and a 2 megapixel macro. There is also a 16 megapixel front camera for selfies. One notable omission is the depth sensor we usually get on the back, but we'd gladly trade that for OIS. The primary camera on the Realme 9 Pro Plus uses a 50 megapixel. This camera seems to be offering a 2x in sensor lossless zoom, which should help preserve details and colors without over-sharpening. The new hardware and sensor allow for new and improved shooting modes. There is Ultra Nightscape Video Now, Smart Long Exposure for Night Mode and Street Photography Suite 2.0. The ultra-wide camera relies on an 8 megapixel Sony IMX355 sensor. There is no autofocus. Night mode works on this camera too. Last is the macro camera with a 2 megapixel OmniVision OVO 2B sensor. This camera cannot capture videos and there is no night mode. The selfie camera employs a 16 megapixel Sony IMX471 sensor. The main camera saves 12.5 megapixel photos by default, and those are excellent for this class. The resolve detail is plenty, the contrast is the high, the white balance is mostly accurate and there is no visible noise. The dynamic range, despite the auto HDR, is about the average. The images look natural despite the clipped highlights, though we would have traded a bit of the contrast for a slight dynamic boost if we could. The sharpening process is not a cup of tea as the photos look over sharpened. Other than that, the primary camera does save great photos. Alright guys, time for an overall verdict of the Realme 9 Pro Plus. Talking about the pros first, well, the number one pro is the Super AMOLED display that this phone has to offer with 90Hz refresh rate. The photochromatic matte finish at the back is visually really appealing. Plus, the battery is super strong and it comes with a super fast charging. The triple camera setup of this phone is really cool and amazing, with primary camera at the main helm of the things, providing a nice day and night feature. The loudspeakers of this phone are of good quality as well. Plus, इस phone के अंदर आपको मिलेगा
3.5mm jack and Android 12. Also you will get Realme 3.0 UI. So overall काफी सारे pros है इस फोन के. आइए चलिए बात करते हैं about the cons. The number one con is the pricing. It's a bit on the competitive side. Plus इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा HRR gaming. Also you won't find a micro SD memory card slot and ये फोन नहीं है splash proof. बट ओवरऑल इस फोन के जो प्रोज हैं वो आउटवे करते हैं कॉन्स को. सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर बाइंग इट सिंस इट्स अ नाइस 360 डिग्री प्रीमियम स्मार्टफोन एंड Realme हैज रियली अपग्रेडेड द फीचर्स ऑफ दिस फोन दिस टाइम. So guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो. For more such amazing videos from my end, you guys need to like, share and subscribe our channel. Until the next video, stay happy and stay safe.